हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स, जहां हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स फ्रॉम बेसिक टू मास्टर। आज हम इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर। नेशनल इनकम चैप्टर में लास्ट में एक कंसेप्ट दिया है जो लगभग हर साल 3 मार्क या 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आया तो उसको कैसे अटेंड करना है और कैसे फुल मार्क्स लेने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द जीडीपी एंड व्हाट इज द वेलफेयर। जीडीपी मींस सिंपली डोमेस्टिक इनकम। वेलफेयर मींस व्हाट सिंपली इट्स अ वेल-बीइंग ऑफ द पीपल। और वेल-बीइंग हम कैसे मेजर करते हैं? अगर लोगों के पास कुछ मटेरियलिस्टिक वेलफेयर आता है तो हम उसको बोलते हैं कि वेल-बीइंग ऑफ द पीपल और द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर लोग अपनी इनकम में मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विस अगर परचेस कर पाते हैं तो उसको हम बोलेंगे वेल-बीइंग और द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि हायर द जीडीपी greater is welfare, lower the GDP, less is welfare, but it is not correct every time. ध्यान में रखना, हम ये जो जनरलाइजेशन करते हैं ना कि ज्यादा इनकम मतलब ज्यादा वेलफेयर, नो नो नो, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, इसकी आंसर और इसकी जो रीजन से हमें देखना है। सी, हायर जीडीपी जनरली टेकन एज अ ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द पीपल। ज्यादा रिच कंट्री मतलब ज्यादा वेलफेयर, ऐसा एक हम जनरलाइजेशन करते हैं, बट इट इज नॉट करेक्ट एवरी टाइम। व्हाट आर द लिमिटेशंस? तो ये लिमिटेशंस हम देखने जा रहे हैं कि इस वजह से ऐसा हो सकता है कि देयर इज अ हायर जीडीपी बट देयर इज अ नो इकोनॉमिक वेलफेयर इन द कंट्री। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द रीजन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी। Generally, as GDP increases, inequality also increases. In many countries, it happen that जैसे कंट्री का जीडीपी बढ़ता है, इनइक्वालिटी भी बढ़ जाती है। अपना देश भी उसका एक एग्जाम्पल है। जीडीपी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, बट देयर इज अ इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी आल्सो। तो इस जीडीपी का क्या काम है, क्या फायदा है? अगर जिससे लोगों को फायदा नहीं होता, लोगों का वेलबींग नहीं बढ़ता, लोगों को जो चीजें गुड्स एंड सर्विसेज सस्ते दाम पर नहीं मिलती है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट हायर जीडीपी? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट if distribution of GDP is equal or your GDP distributed in a equitable manner, then we can say there is a equality in the country, there is a welfare of the welfare or well-being of the economy. But your GDP distributed among the society in inequitable manner, that means maximum income goes to the rich people and the minimum income goes to the poor people. So what is the use of that higher GDP or greater GDP? So remember that greater GDP means not greater welfare of the economy. Okay, so this is the first point. Second is change in price. You know that GDP calculated at current year prices and constant prices or base year prices. In previous video we already learned. ये जो जीडीपी है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों से अफेक्ट होता है। इकोनॉमी में अगर आपका आउटपुट नहीं बढ़ा है, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट प्राइस अगर बढ़ गया है तो ये दिखाता है कि आपका जीडीपी बढ़ गया बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। ओके, तो अगर प्राइस बढ़ने की वजह से अगर आपका जीडीपी बढ़ा है और आउटपुट वही है, दैट मीन गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल टू द पीपल। ओके, जो लास्ट ईयर था उतना ही अवेलेबल है, तो क्या फायदा है? ओके, तो ध्यान में रखना है कि चेंज इन प्राइस अफेक्ट वेलबींग और द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। जीडीपी इंक्रीज हो गया बट उससे ज्यादा प्राइस भी बढ़ गया तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। सो अगेन इट इज प्रूवन दैट greater GDP doesn't means greater level of welfare in the economy. Next point is non-monetary exchanges. In any economy, there are so many types of economic transactions. Some transactions can be monetized. That means they can be explained or expressed in the money term. But there are some economic activities which cannot be expressed in a money term. For example,
डोमेस्टिक सर्विसेज, सर्विस ऑफ हाउसवाइफ्स, ओके, देन किचन गार्डनिंग। ऐसे कितने सर्विसेज है डोमेस्टिक सर्विसेज विच अफेक्ट अवर welfare or the welfare level of economy. But since data is not available, that value of service cannot be expressed in the money term, it cannot be included in the national income. उसको national income में count नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका data available नहीं है, उसको money में नहीं बताया जा सकता. Okay, so if there are monetary exchange in the economy, that means there is a welfare of the, that means there is well-being of the society also. Okay, ऐसा नहीं कि ज्यादा इनकम ही होना चाहिए, ज्यादा जीडीपी होना चाहिए तभी वेलफेयर होगा, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, इफ देयर आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज वेल एज देयर आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओके, बोथ अफेक्ट ऑन द वेलबींग ऑफ द पीपल और द वेलबींग ऑफ द इकोनॉमी. सो इनको हम काउंट ही नहीं करते, कंसिडर ही नहीं करते, तो हम वेलफेयर को कैसे कंसिडर कर सकते, काउंट कर सकते. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन. ओके, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज are not included in the national income or the domestic income. Next है externalities. What are the externalities? Externalities are benefits or harms of an activity by individual or any firm for which we are or that firm or individual is not penalized, okay, or not paid. हम ऐसे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं या फिर कोई कंपनी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है जिससे सोसाइटी को हार्म हो जाता है, मतलब दे लीड्स टू हार्म टू द सोसाइटी, बट दे आर नॉट पेनलाइज्ड. देयर आर सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर व्हिच वी हैव नॉट पेड एनीथिंग बट स्टिल वी आर गेटिंग बेनिफिट. तो ये जो बेनिफिट्स एंड हार्मनेस है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दीज आर नॉट कैलकुलेटेड और कंसिडर्ड इन द जीडीपी. अभी उसमें भी दो एक्सटर्नलिटीज है. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, दैट इज बेनिफिट टू द पीपल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट कोई हमारे घर के आसपास कोई ऐसा गार्डन या कुछ ऐसा लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए ऐसा कुछ ट्रैक बनवा के देता है, तो इट लीड्स टू और इट एड इन द वेलबींग ऑफ द पीपल. इसके लिए लोग पे करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते, बट स्टिल लोगों का वेलफेयर वेलबींग बढ़ता है. ओके, इसको नेशनल इनकम में काउंट कंसिडर नहीं कर सकते हैं. नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. व्हाट आर द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज? These are the harms, okay, because of economic activities for which that individual or that institution is not penalized. For example, हमारे एरिया में कुछ इंडस्ट्री शुरू होती है, उससे कुछ पॉल्यूशन हो रहा है. अभी पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी का वेलफेयर कम हो जाता है, भले पैसे मिलते हैं लोगों को, बट well-being or the welfare of economic activities, economy goes to decrease. Okay, तो इकोनॉमी में अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है तो वेलफेयर बढ़ता है, अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है तो वेलफेयर कम हो जाता है. ओके, सो डिपेंड्स अपॉन द विच काइंड ऑफ एक्सटर्नलिटीज. पॉजिटिव है तो वेलफेयर, नेगेटिव है तो वेलफेयर कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. योर जीडीपी इज इंक्रीजिंग, but at the same time your population is also increasing. Even we can say your growth of population is more than growth of production. Then what? पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है और प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सभी लोगों की नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी. वहां क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा तो उस लोगों की डिमांड बढ़ेगी, अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी डिक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द और वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. लास्ट वन है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी. कंपोजिशन ऑफ जीडीपी. इन योर जीडीपी और हाउ योर जीडीपी कंप्राइजेस. आपके जीडीपी में कहाँ से ज्यादा प्रोडक्शन आया है, मतलब आपके आउटपुट में, प्रोडक्शन में किसका शेयर ज्यादा है? गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज में भी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पुअर क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल. ओके,
if maximum production or maximum output is produced for the rich and middle class people, then we can say there is a greater welfare of the society. But maximum amount of product is produced for the defense sector, जो वॉर के वेपन्स वगैरह रहते हैं उसको अगर हम प्रोड्यूस करेंगे और हम दिखा देंगे हमारा जीडीपी बढ़ गया है, तो उसका हमारे वेलफेयर पर, वेलबींग पर कुछ असर होने वाला है? बिल्कुल नहीं. So whenever there is an increase in GDP, there should be increase in welfare also. But because of that reasons, we can say as there is an increase in GDP, every time there will not be increase in welfare of the well-being of the society. So remember all these points, okay? I can ensure you that if you cover all these points, you will get full marks, okay? तो शॉर्टकट में उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखने हैं और आपको एक्सप्लेन करना है कि greater GDP doesn't mean greater level of economic welfare. Thank you so much.